you have taught some skills. ESL is there, yeah, great. ESL is there, so you can say that I have worked in ESL. So these are the organizations. So instead of writing a co-curricular activity, write organizations which you have worked in, and once they ask you what you have done, then elaborate on these topics only. So can we move on the Git and GitHub part? Please write yes. Okay, okay, I've got enough responses. Okay, so finally we are moving toward Git and GitHub, because right now you have learned how to gain experience, how to build a resume, but how can you showcase your skills if it is not on internet, right? So for pushing anything on internet, any code, any technical skills, what you need is Git and GitHub. So let's start, because Git and GitHub is what you need in your life. Okay, let's get in together. So what GitHub is actually a version control. Version control basically means that you need to manage a particular timelines of what you have done throughout the project, how you have done. So that's why Git is there, because if any code is there which have bug, then you can instantly revert it to the previous commits, so that your code is bugless. Okay, or you can fix that bug in the meantime. So that's why version control is very important. You have very efficient tracking of any changes you do, and conflict prevention is always there, because without Git, the problem before Git is people were using zip files to transfer their code to their collaborative developers. So that is not at all a good thing, because if you want to work collaboratively in a sync, and you do not want that you are asking just that make a zip file and give it to a developer friend. Okay, that is not a good thing. So Get an emergency situation helps to as fast recovery and rollback and crisis management. So this is all the Git features, but we need to have a hands-on experience. So first, let's us understand what Git flow is. Then we will move on towards the hands-on experience of how to use a Git. Okay. So basically, Git flow is working directories. That is, working directories are none other than your folders which you work on in your laptop or your local host. Those are your working directories. Then you stage your changes. There are few steps which you do. That one is local is there. Local changes are there, which is stored on your local host, or you can say that on your laptops only or your desktops. But once you push those changes, you go to the remote servers which are provided by the GitHub. Okay, so on GitHub you can access it from anywhere. That's why you need to understand what are the flow, what are the commands you need to run. So that is how you can move on towards the GitHub. So there are basic commands which I'll show you, and we will have a hands-on experience on these commands, and will make your first repository if you have not made. There are several which have not made any of the repositories. So what are some of the, these are some of the basic, you can say commands which you run in a Git. So we will see hands-on experience in all of them. So are you ready? Can we start our hands-on experience on Git? And you can write yes. Okay, so I'll just share my screen. Okay, so for an instance, let's say that I have this folder and I have my GitHub there. So what you have to do is, for using Git and GitHub, you need to download Git. So what you need to it is download Git. You can see Git downloads. From here you can select whatever versions or whatever you are using. If you are using Windows, then you have to install this standalone installer. Then 64. You can see that it is being downloaded. Once you have downloaded this, you do not need to do anything. Just click on next. It will get installed on your system. Okay. So we are not going to install it again, as I have already installed it. So from here we will start on making our first Git repository.
for making any of the repository, click on this new tab. You can see multiple options here. You have to name your repository. So let's say demo1 as the repository name, and you can select the visibility. So visibility is if you are making your code public, then make sure you do not leak any of your secrets here. And if you are making it private, then you do not need to worry until unless you add any of the unknown people in your collaborators list. So we'll see everything line by line. We are making this code as public. Now let's create this repository. So you can see we have created our first repository. Now we will push some of the things here. So this is my folder from which I'll access the Git. Let's just open it. Sorry. So until here, everyone is with me, right? So let's start. So let's create a file, or we can say we have to initialize our Git repository. So if you want that it is hard to learn the commands for initializing any repository, you can just check out this and you can just copy paste it from here only. I'll just copy paste it from here, that Git init. You can see that we have initialized the Git repository, but we have not yet configured it. We have not yet done any of the connection with the remote server. Once I initialize any of the repository, you can see a green option coming here, right? So what this green option is, that these are untracked files. We will have a deep conversation later on untracked file and modified files. Once you're in it, if you want to add anything, like we haven't created any uh, readme file, let us create any index.html which we will push. So let's create any index.html file. Yeah, let's say this is our get and getter. Okay, workshop. So I have created a file. Now I want to push it on the GitHub so that everyone can access it. So what should I do? So the basic command which I need to do is stage these changes. So how should I stage this? So for this you have to write git add, and here you have to write the file name. If you want to add all the files at one, you can write dot. If you just have to stage the index file, then you have to write the file index.html. So right now I want to push everything on the GitHub. So what will I write is git add dot. So from here you can see permission denied. Okay, I'll just simply uh, next. Okay. Okay. So let's just get at dot. I have done. Okay. So those changes are now been staged, and what I need to do is I need to commit these changes. So what should I do is just write get commit, and now once I commit this, I need to provide my fellow developers that what I am committing. That's why I need to write a message. So for that I need to write dash m and then the message that this is my initial commit. So I should write initial commit, and that's it. Okay. So once I have committed these changes, now these are stored in my .git folder, you can see, or you can say my local computer. Once I have done this, what I need to do is push it on the branch. So for pushing, we need to connect our remote. So for which I need to make a branch first. I'll be naming it as main. So git branch dash m main will make me a branch. Once I have created this branch, I need to connect my server. So for that, I'll just copy this command and paste it here, git remote add origin, and in which I'll provide the link. Okay. So this is how you can connect to any of the remote branch. Okay. And once you have uh, connected to the servers, what you need to do is to push it. But the several people what do is they just write get push. So this is what error comes in when you just write get push. You do not need to write just a get push. What you need to do is you need to write that
dash u, which says that it is a upstream branch. Okay, so this is how you finally push your first thing into your GitHub pack. Okay, so this is your first basically repository on which you have pushed. Now you can just refresh it and see that yeah, all the files which are been there in your folder are been uploaded to Git. I'll just show you some more which you will be using. Just two, three more commands which you will be using throughout. So the another thing which will be, if you want to create a branch, then what you can do is just write git checkout, because in any of the startups or any of the work culture you will be in, you will have to work on branch. So you need to write git checkout dash b and then the branch name. If I'm being assigned to provide a create a about us page, I'll just add about branch and just do what is, I just create a about page and just write whatever I want and follow those steps only. Okay, I'll just get add, get commit, add it about, and just push it. So again, I have not written dash u, so that's why just copy it. Okay, so this is how you can work on branches. If you have to create a pull request, what you can do is go to GitHub, just refresh it once. You can see there is a about branch. If you need to create a pull request, just click on the contribute and open a pull request. Okay. From here, you can write all the description which you have done in your repository, or you can say on your branch, and create a pull request. Once you have created a pull request, your fellow developer or your reviewer can review it and merge it. Do not merge yourself what you have created as a pull request. The other fellow should do this merge pull request. Okay. So here there is no one, so I can just merge this pull request. But this is not a good practice, so do not merge your own code. Let someone else review it first. Okay, so you can see that about.html is again been pushed on the main branch as well. So this is the basic commands you will be following throughout your open source journey, in your industry journey and all. Okay, so just wrapping my session with just a minute. Okay, just so let's see what are the use cases of this Git and GitHub. Okay. So use cases basically lie between that you can work collaboratively with your fellow developers. CI/CD is very important. You will see it everywhere you go in your startups and elsewhere. So CI/CD will be there, which stands for continuous integration and deployment. Once you push any change on the main branch or the master branch, whichever branch the owner of that repository made as the production branch, will directly be pushed on the production, and you can see the live project getting affected from your code without any manual deployments. So that's why GitHub is very effective for these purposes. So that's why you need to have look at the GitHub. Whatever I taught you in the GitHub right now is the things you will use 80% of times. So that's it, guys. So you must have hated Git, but now you should hate it less. Let's wrap up this session here. Okay. Thank you, guys. Thank you, sir, for enlightening us with your valuable guidance. I hope everyone has taken away something new from your session. Now it is time for another amazing session and another amazing speaker. Mohit will introduce you guys to him. So, our second speaker is Sanjay Singh Rajput, sir. And trust me, mates, nobody better in the college can explain the need and deed of open source and how the spirit of collaboration in open source enlightens us come from.
So he will bring a unique perspective to the table as he have worked experience in on doing numerous open source contribution and real world projects. His practicality can be proven by his achievements as he is a GSOC fellow, done LFX mentorship, been a participant in Summer of Bitcoin, has done MLH fellowship and interned at more than three companies. So he have a passion for collaborative learning and community, and his insights are sure to be invaluable to all of us. Sir, please. Hello everyone. So, how was Yes, your day so far? Well, let's start with the very basics and then we will jump into the main things. So, let me present my screen quickly. Okay, can you guys see my screen? yes, Yeah, so here it is. So, I got a call from Manas that they are going to have a workshop on open source, and I thought like this would be a really good place for me to share my knowledge. And without any further delay, let's get right into it. So, about myself. So my name is Sanjay Singh Rajput, and I've been coding since the very beginning. I'm coding and I'm doing open source from first year of college. I have done Google Summer of Code. I have been selected for the MLH fellowship, and I have also worked with the Linux Foundation. So while working with all these communities, I got to interact with a lot of people who are expert in open source. I have worked with Kunal Kushwa. I have worked with like the top of the industry people working with the CTOs, and taking their perspective is also important. And while I was contributing to open source, I got this idea that why not to do something new, something great. And then I started looking for some startups where I can work. So I have worked with around 3 to 4 startups, where majorly I have worked in the web development sector. I have worked as a backend developer, I've worked as a front end developer, and currently I'm trying to focus more on the backend and DevOps side of things. So that's what I'm doing right now. And this is all about myself, and let's get into the session. So yeah, गूगल समर ऑफ कोड, सबके पास एक क्वेश्चन होता है कि भाई क्या करना है इसमें. मेरे व्हाट्सएप पे बच्चे पूछते हैं कि यार कैसे क्रैक करना है, क्या है भाई, होता क्या है. एंड लाइक बहुत सारे डाउट्स हैं, हाउ टू अप्लाई, व्हाट टू डू. इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल प्रोसीजर, एकदम सीधा सीधा नहीं होता है कि दैट यू जस्ट गो एंड अप्लाई इट और सिलेक्शन हो गया. एंड इट्स वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, लेट मी टेल यू दैट. लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड 1100 बच्चे सेलेक्ट होते हैं. सो अगर लेट्स से 10 या 15 हज़ार एप्लीकेशन आती हैं, तो इट्स लाइक मतलब 1% से भी कम चांसेस होते हैं आपके सिलेक्ट होने के. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Anyways, let's get into the basics. So GSOC stands for Google Summer of Code, as you might know it. So GSOC में होता क्या है कि that there's a company called Google, जो सब जानते ही होंगे. So there is a company called Google, and they have a program called Google Summer of Code, in which what they do is there are different open source organizations. बहुत सारी open source organizations हैं दुनिया में, और वो अपना अपना काम करती हैं. ठीक है, जैसे Ubuntu हो गया, वो एक open source organization है. लिनक्स है, और फिर बाकी हैं जो तुम लोगों ने यूज करा हुआ. वीएलसी प्लेयर सब यूज करते हैं. वीएलसी प्लेयर ओपन सोर्स है. ठीक है, वैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं. सो व्हाट गूगल डज इज इट सिलेक्ट्स अ कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करते हैं वो लोग, और वो लोग उसे एक प्रोग्राम के अंदर लेके आते हैं. तो उस प्रोग्राम के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट होती हैं. वो नंबर करीब होता है 70 to 80 ऑर्गेनाइजेशन होती हैं टोटल में. और वो सब ऑर्गेनाइजेशन आके स्टूडेंट्स को इनवाइट करती हैं कि स्टूडेंट्स आएँ और कोलैबोरेट करें हमारे प्रोजेक्ट्स में. और ये जब सारी चीज़ें बन रही होती हैं, तो इस पूरे ओवरऑल प्रोग्राम का नाम दिया गया गूगल समर ऑफ कोड. तो बेसिकली समर्स में होता है, जब आपके एग्जाम्स ओवर हो जाते हैं फाइनल एंड सेम के, then we start in this session. So this is what GSOC stands for. And those of you might know Google Summer of Code Larry Page ने start किया था. So Larry Page is the founder of Google. Larry Page and Sergey Brin. And this is the reason why it has so much value, because like they were the founders of Google, and still वो लोग देखते हैं Google Summer of Code को. So Sundar Pichai is not the one who looks after Google Summer of Code, but Larry Page is the one who looks after Google Summer of Code. So this is why it's so important, and this is the reason why this program continues every year and it doesn't shut down. You know. Anyways, let's get to the important aspects. Requirements क्या क्या हैं, है ना? What is the eligibility and the rest all of the things. So requirements बहुत simple है इस program की. You need to be a college student, and now
You don't even need to be a college student, you just have to be at the age of 18 plus years. तो अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, irrespective of your college, irrespective of your like आप या डिप्लोमा कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, यू कैन पार्टिसिपेट. देयर इज नो, आप इवन कॉमर्स लेके रखा है, सीए लोग भी करते हैं उसमें पार्टिसिपेट. इफ यू आर डूइंग टू सीए, इफ यू आर डूइंग लेट्स से एमबीबीएस, यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम. तो कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ये सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कर सकते हैं. एनीवन कैन पार्टिसिपेट, यू जस्ट हैव टू बी at the age of 18 plus. Now the next part is how to apply. It's like very very important stuff. How to apply, इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ. तो इस सेशन की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है मई मंथ में, और हम मई मंथ से इसे स्टार्ट करते हैं कि मई मंथ में होता है. उसमें काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई करती हैं, फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस की एक लिस्ट बनती है, लाइक देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और वो लोग अपने प्रोजेक्ट्स लिस्ट करती हैं. सो करंटली वी आर इन अक्टूबर, 28th of October है आज. By the end of February, you will get an idea of what all organizations will get selected. So once you have an idea of what all organizations will get selected, what they do is they shortlist some projects. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो उन प्रोजेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, एंड देन दे विल रिलीज द लिस्ट इन अराउंड March, beginning of March or ending of March, or around third week of March, around 25th March, you will get the list of projects and the list of organizations that are participating. So once you get that, once you get the list of organizations, what you need to do is you need to shortlist a couple of projects out of them. So as I mentioned earlier that we have around 70 to 80 organizations, and in those 70 to 80 organizations we have like at least each organization has 3 to 4 projects. So in total you have around 800 to 900 projects in total of Google Summer of Code, and they vary from things to things. Like there are some projects in C++, there are some projects in Golang, there are some projects in JavaScript, and a lot of them like Flutter, Android, web development, AIML, Bitcoin, blockchain. You will get all these things in Google Summer of Code, and the variety is vast. So even if you have interest in, let's say, blockchain, you can contribute here. That's not an issue at all. So once the projects are listed on the page, once you have all those projects on the page, you have to prepare something called a proposal. So to prepare a proposal, basically what you need to do is you need to put all the things that how are you going to make this project की timeline क्या होगी, and what are the requirements that you need, and what are the things that you might need, like क्या क्या चीजें और उसमें डालनी पड़ेंगी, and how you are going to structure it. So basically, if I have to summarize to make a proposal, you just have to answer the 4 or 5 why. So it's like why, where, how, what, and when. So these are some of the primary questions that you have to answer in a proposal. And if you want to get more gist of it, let me show it to you also. But if you just have to go here, you can check out my Hashnote blogs. So these are my Hashnote blogs. Let me share the link with you people. Also go and save. So just go here, search for GSOC. Yeah, so here is the article for it. So it says that how to write a proposal in Google Summer of Code. I have written this article myself. So let's go through this article quickly, and we will have a lot of things here. So as I mentioned that there are basically 2 kind of proposals. One सुन is with template, डिस्टर्ब the मत other one करना, is without वर्कशॉप चल रही है, मैं होस्ट हूँ है ना. So कई बार क्या होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन आपको टेम्पलेट देती है, जैसा ऐसे एज में होता है कि ये टेम्पलेट है, इसके ऊपर बनाना है, ठीक चुप हो है, जा. और आप ये देख लेना. तो वो चीज़ भी होती है कभी कभी. और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें टेम्पलेट ही नहीं होता है. सो इट्स लाइक आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, ठीक है. और अगर तुम्हें प्रपोजल्स एग्जांपल के लिए, क्योंकि समझ में नहीं आता बच्चों को कि प्रपोजल बनता कैसे, तो मैंने लिंक किया हुआ है. क्लिक ऑन दिस लिंक. हम लोगों ने बनाई थी रेपो, सारी ईयर्स के प्रपोजल डले हैं यहाँ पे, 18, 21, 2016, ठीक है. इवन 2023 का डला है. सो लेट मी ओपन इट अप फॉर यू. राजीव का देख लेते हैं. सो लाइक दिस इज हाउ वी मेक अ प्रपोजल. सो एप्लीकेंट का नाम है, नेम है, और ये सिलेक्ट हुआ था प्रोजेक्ट जिसका मैं प्रपोजल दिखा रहा हूँ तुम्हें. So if you can get some idea out of it, it's very good. Then you write your personal information, then you write your project description. उसके बाद उसका टाइटल आ जाता है, उसका साइज, उसका ड्यूरेशन, and rest all of the normal headings.
वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे भी लिस्ट की हुई हैं। लाइक की हेडिंग्स में अगर मैं आऊँ तो सबसे पहले हमें एक टाइटल देना होता है कि तुम किस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Then comes your information, like your college, your location, what's your email address, gender क्या है आपका, and link to your social media handles. इसमें GitHub की link that is very important. Do add your GitHub link because they will check your GitHub before selecting you. Okay. About yourself, what you are, what you do, कुछ experience है पहले का, कुछ projects वगैरह बनाए हैं, you can list all of them here. So it's like a very comfortable thing, right? And do one thing. Yes. Then comes deliverables. So deliverables is basically a rough idea of what you are going to do and basically what you are trying to achieve here. कैसे होंगी सारी चीजें और इसमें तुम क्या क्या करने वाले हो, वो सारी चीजें भी इसी में तुम्हें ऐड करनी रहेंगी, deliverables, right? And then comes your past work. If you have any, like many people say that you need to have good past contributions in a project before you get selected. So this is the place where you write it. You put your work here, that this is the work that we have done and this is what we will do in future also. So that's what makes it so important. And like after we have done that, like your normal information is required and there are certain rules that you need to follow the correct code of conduct, that also you need to do. So once you do all these things, like these are some of the headings that you need to cover to make a good proposal, और इसी proposal से तुम्हारा selection होगा, क्योंकि everything is dependent upon this proposal. So if I have to open this, so this person has made this proposal. So this is one of the key points of, let me tell you put this way, that this is the key point of differentiation. People say कि भाई difference कैसे लाना है, सब लोग apply कर रहे हैं, तो वो इस proposal से आता है. जितना अच्छा तुम्हारा प्रपोजल होगा उतने तुम्हारे सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है, बहुत ही सिंपल फंडा है. कुछ गोल्डन टिप्स भी डाली हुई है मैंने. अननेसेसरी फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत डालना. ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है. ठीक है, फीडबैक ले लेना. लाइक देयर इज अ डेट, जैसे आई थिंक 15 अप्रैल या 25 अप्रैल तक सबमिट करना होता है प्रपोजल. टेंटेटिव टाइमलाइंस है, हो सकता है इस ईयर चेंज हो जाए, तो उसके पहले हो सके तो मेंटर से ले लो फीडबैक, क्या ये प्रपोजल बनाया मैंने, कैसा है. ठीक है, या ऐसे बंदे से रिव्यू करा लो जिसने पहले सिलेक्ट हुआ है वो GDSC में, तो उससे तुम्हारे सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना. तो लाइक दिस इज वन थिंग. एंड इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है दैट हाउ टू सिलेक्ट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो. भाई ऑर्गेनाइजेशंस कैसे सिलेक्ट करना है अलग अलग, है ना. तो आई वुड से काफी बच्चों का डाउट होता है कि हम अरे यार फेंको फाको मत यार, इधर वर्कशॉप चल रही किस है. तरीके से स्टार्ट करें. CP कर रहे हैं हम, हमारे CP ज्यादा किया है हम लोगों ने, है ना. CP ज्यादा किया हुआ है और हमें GDSC में पार्टिसिपेट करना है. C++ आता है, CP कराए, DSA कराए, लेकिन डेवलपमेंट नहीं कराए. तो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस दैट कंप्लीटली रिटन इन C++. दे आर कंप्लीटली इन C++. तो आप जाके उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी ढूंढ सकते हो और उसमें भी अंदर चले कंट्रीब्यूट आ कर यार सकते हो. प्लीज, अभी मतलब तो जैसा कि मैंने सेशन दिक्कत के नहीं होनी स्टार्ट चाहिए होने कुछ भी. पे ठीक भी है, बोला बस था इतना दैट बता रहा हूँ, चुप रहना पूरा टाइम. JSOC has a vast number of projects, like from web development to AML to blockchain to all the things. Even if you go and search, let me do it for you. Google kind of code organizations. You will find a lot of organizations. ये देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, मीडिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड है, और तुम्हें लगता है तो तुम ऐसे भी सर्च कर सकते हो C++. ये C++ का ऑर्गेनाइजेशन है. यहाँ पे किसी ना किसी में C++ यूज हो रहा होगा. सो दिस वे यू कैन जस्ट सर्च. लगता है जावा में कंट्रीब्यूट करना है, जावा से सर्च कर लो. ठीक है, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को पिक कर लो. प्रेसिडेंट फाउंडेशन को ले लेते हैं. ठीक है, यू गो हियर एंड एज यू कैन सी पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एंड्रॉइड बनाना इन लोगों ने. ये प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो गए थे, है ना. एंड अगर मैं 2022 के आइडिया लिस्ट देखूँ तो ये रही प्रोजेक्ट की आइडिया लिस्ट. ये हमारा 2023 है और ये इनके अलग अलग रैप ऑफ कोर्स हैं. ये प्रोजेक्ट्स डले हुए देखो. So these are some of the projects ideas that you can choose. आप इसमें से जाके ये देख लो कि भाई मेरे को क्या समझ में आ रहा है ना. ऐसा तो है नहीं कि सारे समझ में आ जाएंगे. किसी छोटी चीज से स्टार्ट कर लो. जैसे देखो मैं ओपन करता हूँ, हाई प्रायोरिटी है, इवेंट्स, कलर्स वाला देख लेते हैं इशू. सो हियर इट इज. ये है एक्सपेक्टेड आउटकम लिखा है हमने कि उन्हें क्या चाहिए. इंप्रूवमेंट ऑफ feedback.js एरिया कोड एंड डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव करना है और इंप्रूवमेंट करना है एरिया वाले फंक्शन में. ठीक है,
स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? जावास्क्रिप्ट चाहिए, गिटहब आना चाहिए, वर्जन कंट्रोल आना चाहिए। ये दो चीज तो हमने सिखा दी अभी, प्रथम ने डिस्कस कर दिया था, तो ये तो तुम्हारा कवर हो गया। ये और देख लो, ठीक है। ये मेंटर्स हैं, इनसे तुम बात कर सकते हो, डिफिकल्टी लिखी हुई है, तो ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगी, है ना। और इस तरीके से तुम किसी भी प्रोजेक्ट को जाके देख सकते हो कि यार इतने इश्यूज हैं और तुम ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या मेरी? So your screen is visible, but if you are showing any other kind of screen, like that is not visible. स्क्रीन Only the screen visible is only of the blog you have written. Hash note there. गिटहब नहीं If दिख रहा मेरा? no, एक मिनट रुको यार, बोल देते ना मुझे पहले, क्या दिक्कत थी। अब दिख रहा है? yes, sir. गिटहब दिख रहा है? मैं कुछ दिखा रहा हूँ गिटहब पे लिंक। Huh. कहाँ से नहीं दिखा मुझे बता दो, तो मैं रिकैप कर दूंगा थोड़ा सा। Sir, the moment you started talking about the organization, ऑर्गेनाइजेशन, ओके, सो लाइक फ्रॉम हियर, yeah, या सो लाइक दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन। मैं बस इस पे क्लिक किया था, मैंने 2022 की आइडिया लिस्ट खुली थी, और मैं आइडिया लिस्ट डिस्कस कर रहा था तुम लोगों से कि हाँ अलग अलग इवेंट्स हैं, और यहाँ जाके ये चीज देख सकते हो। तो इट्स लाइक अ थिंग दैट यू कैन डू। आई वाज जस्ट गिविंग यू अ वॉक थ्रू कि कैसे चीजें देखना है और क्या चीज देखना है, ठीक है। सो लाइक दिस इज ऑल अबाउट जीएसओसी। एंड दो प्रोजेक्ट टाइप हैं अभी, एक है 175 आवर्स का होता है, 350 आवर्स का होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था, लेट मी अगेन गो बैक टू माय आर्टिकल, this one might have closed it, block. So तुम वो चीज अपने प्रपोजल में डालोगे। डिलिवरेबल्स इज द प्लेस वेयर यू राइट इट। सो अगर तुम्हारा 175 आवर्स का प्रोजेक्ट है तो तुम्हारी टाइमलाइन 175 आवर्स के हिसाब से बनेगी। अगर 350 आवर्स का है तो 350 आवर्स के हिसाब से बनेगी, ओके। और मेक श्योर कि तुम उसमें सारी चीजें इंक्लूड करो, है ना। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि यार जितने जितना अच्छा तुम्हारा प्रपोजल होगा उतना चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर, कि प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है। करंटली इट्स अ गुड टाइम, अक्टूबर में हम लोग, और करीब हमारे पास 4 से 5 महीने हैं कि यार जीएसओसी में कैसे अप्लाई करना है और बाकी सारी चीज़ें। सो आई वुड से इफ यू आर अ न्यूबी, नहीं पता क्या करना है, ठीक है, स्टिक टू वन थिंग, कुछ भी एक चीज़ ले लो। लाइक इफ यू आर गुड एट जावास्क्रिप्ट देन स्टिक विद जावास्क्रिप्ट, इफ यू आर गुड एट पाइथन स्टिक विद पाइथन, ओके। If you are good with C++, try to find a project that deals with C++. C++ के थोड़े से प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, it is difficult to understand, right? So if you wanted to jump in the web development category, pick a tech stack, उसको contribute करो, find some small issues, try to solve them, ठीक है। अक्टूबर चल रहा है अभी, even if you don't know anything, if you are at zero skill, कुछ भी नहीं आता, तुम तब भी GSOC क्लियर कर सकते हो सीख के, ठीक है। Hardly it will take you 2 to 3 months to learn a tech stack, and then you can start contributing. ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, Matoko. ठीक है। If you can focus on it properly, then you will have a good amount of time that you can use productively, and you can easily make it through. ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैंने भी इसी टाइम पे स्टार्ट किया था, ठीक है। और मैंने तो इवन जनवरी से स्टार्ट किया था, एंड आई मेड इट थ्रू। एंड तब मेरे पास कोई गाइडेंस भी नहीं थी। सो इट्स अ गुड आइडिया कि मैं हूँ, डू लेट मी नो इफ यू नीड समथिंग, आई एम देयर। मेरे सोशल मीडिया लिंक शेयर कर दिए हैं चैट में। So if anyone of you want to reach me out, if you have any doubt, just uh, find me on LinkedIn. LinkedIn पे सर्च कर लेना मुझे, and just text me on LinkedIn. I am super active on LinkedIn. तो वो कर देना, और लगे तो मेरा WhatsApp नंबर ले लेना, मैं दे दूंगा, है ना। वो चीज़ हो गई। इसके अलावा do you have any questions around Google Summer of Code? Can you please give us an idea or a roadmap for a college freshie? As I said, like जो भी चीज़ें हैं, जो भी टेक स्टैक हैं, उस पे स्टिक करो। कोई सा भी एक टेक स्टैक ले लो, उस पे काम करो, एंड कीप थिंग्स फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, ठीक है। बाकी तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं 10 मिनट का सेशन लूंगा लास्ट में, है ना। और मैं सारे तुम्हारे क्वेश्चंस ले लूंगा वहाँ पे। अभी कुछ और बातें करना है मुझे, सो लेट मी कंप्लीट माय सेशन एंड देन वी विल गेट बैक टू इट। सो चलो भाई, जीएसओसी तो हो गया, उसके अलावा क्या, ठीक है। जीएसओसी इज वन थिंग, एंड लाइक देयर आर अदर थिंग्स। एमएलएच होता है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट एमएलएच।
LFX के बारे में शायद कम लोगों ने सुना हो। LFX इज अनदर गुड प्रोग्राम, है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज बताना रह गई मेरे से कि ये सारे के सारे जो प्रोग्राम मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें स्क्रीन पे, सब पेड प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। LFX मेंटोरशिप में अराउंड तुम्हें $3000 से $5000 के करीब मिलते हैं। तो $3000 करीब 2.5 लाख होता है, विच इज वे टू मच अमाउंट, है ना। तो मैं जितने प्रोग्राम्स तुम्हें स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये सब के सब बहुत ही ज्यादा पेड प्रोग्राम्स और अच्छा स्टाइपेंड मिलता है सबका। तो MLH की अगर मैं बात करूँ, MLH इज मेजर लीग फेलोशिप, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्पिटिटिव है गूगल समर ऑफ कोड से, ठीक है। इसमें घुसना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है GSOC से, लेकिन अच्छी बात यह है कि MLH के लाइक MLH हैज डिफरेंट सेशन थ्रू आउट द ईयर, उनके 2 से 3 बैच होते हैं, एंड देन दे कैन आल्सो यू कैन आल्सो ट्राई डिफरेंट टाइम्स। एक बार ट्राई कर लो, नहीं हुआ, यू कैन ट्राई अगेन एंड देन यू कैन ट्राई अगेन, so that is possible. And then comes like MLH के बारे में थोड़ी सी और बात कर दूंगा मैं तुमसे, that you need to make a project। उसके बाद तुम्हें एक फॉर्म भरना पड़ता है। एक बार जब तुम फॉर्म भर देते हो, फॉर्म भरने के बाद तुम्हारा इंटरव्यू होता है, 2 इंटरव्यूज होते हैं, और उसके बाद तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन होता है। उसके लिए भी मैंने ब्लॉग डाल के रखा है, लेट मी टेक यू टू दैट ब्लॉग। Okay, MLH prep experience. So this was my batch and this is me। ये हमारी बैच थी पूरी की पूरी जो सिलेक्ट हुई थी, और हम सभी लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एंड हमारे बैच का नाम pod.js था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड लाइक ये हमारा पहला प्रोजेक्ट बनाया था हम लोगों ने, और उसके ऊपर काम किया था। हमारे डेली स्टैंडअप्स हुआ करते थे, सो ऑल दैट थिंग आई हैव रिटन हियर एंड गो थ्रू इट। ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट बनाया था हम लोगों ने। ये सब हुआ था सिर्फ 1 महीने के अंदर, और हम सैटरडे संडे फ्री रहा करते थे, और ये सब करते करते हमने करीबन लाइक 37 पुल रिक्वेस्ट मर्ज कर दी थी, जून 28 से जुलाई 28। सो एज आई सेड कि 1 मंथ का पीरियड था, एंड लाइक इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तुम्हें और चीजें जानना हो तो यू कैन गो थ्रू दिस ब्लॉग, इसमें सारी चीजें हैं MLH के रिगार्डिंग, ओके। सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हिच इज हियर इट इज LFX mentorship। So LFX mentorship is another open source program, so it's by Linux Foundation mentorship। Linux Foundation का प्रोग्राम है, और इसमें करीब $3000 का स्टाइपेंड रहता है। तो जितना गूगल समर ऑफ कोड में मिलता है उतना ही LFX में मिलता है आपको $3000 का। और LFX में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप साल में करीब 3 बार अप्लाई कर सकते हो, है ना। गूगल समर ऑफ कोड में 1 बार होता है, LFX में 3 बार होता है। और गूगल समर ऑफ कोड और LFX काफी सिमिलर है। जैसे गूगल समर ऑफ कोड में मैंने बताया था कि प्रपोजल बनाना पड़ता है, यहाँ पे वैसा सीन नहीं है। सो यू कैन जस्ट अप्लाई विदाउट प्रपोजल आल्सो, so that's a good thing। वहाँ पे चीजें बच जाती हैं, and chances of getting selected again increases, okay। So and then comes another very good program called Outreachy। So Outreachy is a program that is only devoted to all the girls student। So if you are a female candidate, then this is the program that you should look into। Outreachy is the best program for all the girl students who are aiming for good open source programs। अगर तुम्हें GSOC में भी अप्लाई नहीं करना है ना, तो अगर आप एक फीमेल स्टूडेंट हो, then go for Outreachy। Outreachy has a different level, or in terms of quality I would keep it above Google Summer of Code only, because Outreachy में बहुत selected students होते हैं, और once you get in you have a really good exposure to the industry, okay। And the good part is Outreachy का स्टाइपेंड है $6000, तो जितना GSOC में मिलता है उससे डबल मिलेगा आपको, और आपको काम करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, ठीक है, और इससे आपको जॉब भी मिल सकती है Outreachy से। सो Outreachy has got a lot of advantages। And then comes for C4GT, Code for Good। This is another open source program that got started in India only। ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, और ये भी समर में एक बार स्टार्ट होता है। इसका भी फॉर्मेट वैसा ही है जैसे गूगल समर ऑफ कोड का है, दैट यू नीड टू कंट्रीब्यूट फर्स्ट, देन यू नीड टू मेक अ प्रपोजल, देन यू नीड टू गेट सिलेक्टेड। So the same procedure follows। You can search it online, and like the thing is not complex and it's very straightforward। And ये अभी start हुआ है, like from this year it got started, and they were paying around 1 lakh per month as a stipend for all the students who got selected। And if I'm not wrong, then it was for around 2 months, so like 2 lakh for 2 months was the stipend for this। Then comes the next and the last category, which is octernships। So what is an octernship? I got selected in one of the octernship, and I was working at a startup called Houseware। तो मेरा Houseware में selection GitHub octernship से ही हुआ था, okay। So octernship में क्या होता है कि they will give a project, you have to make that project, and once you make that project,
the company for which you are making the project, they will select you. तुम्हारा 2 इंटरव्यूज होंगे और उसके बाद तुम्हें सीधे इंटर्नशिप मिल जाएगी स्टार्टअप के अंदर. So GitHub Octantship is again a really good thing. The only thing is that GitHub Octantships बहुत कम होती हैं और बहुत टाइम के बाद ओपन होती है और अनसर्टेनिटी है थोड़ी सी कि कब ओपन होगी, कब हायरिंग होती है, कब नहीं होने वाली है. तो तुम्हें उस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा बस. ठीक है. सो लाइक दिस इज ऑल अबाउट ऑल द ओपन सोर्स प्रोग्राम्स. मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यार गूगल समर ऑफ कोड के पीछे मत भागो. ठीक है. जीएसओसी में अगर नहीं होता है तो ये 4-5 प्रोग्राम्स है, इनमें भी अगर तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हारी बहुत अच्छी रीच होगी, है ना. सो GSSC में करना है, that's a good thing. But if you let's say don't get selected in Google Summer of Code, then try for these open source programs. इनकी वैल्यू उतनी है जितनी Google Summer of Code की है. The only thing is that लोगों को पता नहीं है, इतना अवेयरनेस नहीं है इतनी, और उसके कारण से यहाँ पे बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं, तो आपके सिलेक्शन बढ़ जाएंगे यहाँ पे. ठीक है. So this is all about the open source programs. Let's get going. हाँ भाई नेम डाल दी. करियर अपॉर्चुनिटीज बाय ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स. सो ठीक है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट कर लिया, गूगल समर ऑफ कोड भी क्लियर कर लिया, मान लेते हैं. ठीक है. अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? सो द गुड पार्ट इज लाइक once you get selected in a program called Google Summer of Code या MLH कर लो या any other open source programs, you have a good status. Like people will know you, they will know you that who are like what are the things that you have done. They will value you as an open source enthusiast. They will know that you have done something in the past. And let's say that you apply for an internship at a company, and there are two candidates. One has done Google Summer of Code, the other one has not done it. Then your preference will be a lot higher. Chances बढ़ जाएंगे select होने के, है ना तुम्हारे. So that's a good thing. Other than that, like if you are an active in an open source community, every company will like it. हर कंपनी को पसंद होता है कि आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करो, बिकॉज दे कैन सी योर वर्क. वो लोग देख पाते हैं कि भाई तुमने क्या काम किया है और तुम क्या काम कर सकते हो, और ये दोनों ही चीज़ें कंपनी को चाहिए होती हैं. अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो तुम्हें डायरेक्टली भी हायर कर सकती हैं. सो दैट्स व्हाट हैपेंस एंड दिस इज द, यू माइट हैव हर्ड कि देयर आर अ लॉट ऑफ रिमोट जॉब्स के बारे में सुना होगा तुम लोगों ने. एंड यू माइट हैव हर्ड कि यार रिमोट जॉब में पे बहुत अच्छा होता है, 30 से 40 लाख रुपए का बेस सैलरी होती है. तो इट्स बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स ओनली. बिकॉज इन ओपन सोर्स यू गेट टू शेयर योर नॉलेज एंड यू कैन, योर वर्क इज पब्लिक, एनीवन कैन गो एंड चेक योर GitHub प्रोफाइल. वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं कि तुमने क्या काम करा है पहले. एंड वंस दे नो इट दैट यू कैन डू समथिंग, वो तुम्हें हायर कर सकते हैं. ओके. So that is the place where open source comes into picture, and open source plays a very important role. So if you do it, it's good. ठीक है. ज़्यादा तेजी में मत रहना, टाइम लगता है. इट विल टेक यू अराउंड 2 to 3 months टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स. 5-6 महीने लग जाएंगे समझने में कि करना क्या है. ठीक है. इट टेक्स टाइम. इंस्टेंटली चीज़ें नहीं होंगी. इफ यू थिंक दैट हम 2 महीने में कर लेंगे, दैट विल नेवर हैपन. It will take time. You need to give time, and you have to be persistent also. There will be a lot of rejection. I have mentioned around these many programs. इन सभी प्रोग्राम्स मैंने अप्लाई किया है और काफ़ी सारों मेरा सिलेक्शन भी हुआ है, और मुझे काफ़ी सारे टाइम रिजेक्ट भी मिला है. तो बी रेडी फॉर रिजेक्शंस, दे विल हैपन. एंड लाइक यू हैव टू बी परसिस्टेंट. एज आई सेड कि परसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा, तब जाके कुछ बात बन पाएगी. और रही बात तुम्हारे टायर 3 कॉलेज की, है ना, तो वो तो यार भूल जाओ. यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता. अगर तुम्हें काम आता है तो तुम कर लोगे. बहुत सिंपल सी बात ऐसी है. सो योर कॉलेज डजंट मैटर. बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होता है. सो अगर आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो यार कॉलेज तो तुम छोड़ दो. वो लोग तुमसे ये भी नहीं पूछेंगे कि तुम इंजीनियरिंग भी कर रहे हो. दे जस्ट डोंट केयर. ओके. व्हाट दे केयर इज व्हाट यू डू. इफ यू आर गुड एट व्हाट यू डू, देन you have a green light from all ends. That's it. So I think this wraps everything from my side. Last section है हमारा Q&A section. So you guys can start posting your questions. I will take them one by one, and I will try to answer as much as possible. Thank you. Should we make our own portfolio website, and what should we mention in it? Yeah, you can make a good portfolio website. That is a good thing. Portfolio में you can mention your projects. You can uh, you can share the things that you have built. You can share your social media links. Social media links डाल सकते हो, है ना. उसके अलावा तुम ये डाल दो कि यार मैं करना क्या चाहता हूँ, about me. So
if I am, let's say, if I am